صحافت کی دنیا میں معروف نام وقار علی خان پیش کرتے ہیں پروگرام پاکستان سے آگے. دنیا بھر میں آباد پاکستان کے بارے میں بھرپور رپورٹ، سماجی، فلاحی، اسلامی، سیاسی، سائنس، صحت اور JFK کے ساتھ پراپرٹی پر خصوصی رپورٹ. دیکھیے پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ دنیا بھر میں آباد پاکستانی پاکستان کی ترقی کے لیے سرگرم. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ. امریکہ، یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا کی ترقی میں پاکستانیوں کا حصہ. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے. دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا فلاحی، سماجی، سیاسی، معاشی، تجارتی سطح پر پاکستانیوں کا حصہ. وقار علی خان کے ساتھ پروگرام پاکستان سے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان حاضر خدمت ہے پروگرام پاکستان سے آگے، اور آپ دیکھ رہے ہیں TV1. ناظرین، TV1 ایک مشہور معروف پروگرام ہے جو ڈومیسٹک پروگرام کے لیے کافی معروف ہے، اور یہاں پہ زیادہ تر ٹیلیتھون اور مختلف پروگرامس یہ لے کر آتے ہیں ریاض بابر، اور جس سے کمیونٹی کو بہت فائدے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بارے میں دیکھنا ہے، اپنی کمیونٹی کے بارے میں معلومات کرنی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ چینل اس کو فوکس کرتا ہے. تو اسی پہ میرا پروگرام آ رہا ہے، پروگرام پاکستان سے آگے، جس میں سفیر پاکستان بھی پیش کر رہا ہوں. ناظرین، آج ایک اور اہم ترین رپورٹ ہے. جو جانتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ کے لیے کافی آرگنائزیشن کام کریں، کافی ادارے کام کریں. اس میں ایک سفیر پاکستان بھی ہے، اور پاکستان سے آگے پروگرام بھی ہے جو بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہے. پچھلے ہفتے ایک زوم ویبنار کیا تھا، جس میں پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس نے اس کو انڈر رائٹ کیا تھا، اور OPTV گلوبل نے، اور وہ پروگرام نہایت ہی کامیاب رہا. اور یہ ہم نے کی تھی ان دی کولیبریشن آف دا PTI امریکہ. PTI USA کے جو روئے رواں ہیں جناب راجہ یعقوب صاحب، جو شکاگو میں بیس ہوتے ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، انٹرپرنور بزنس مین بھی ہیں. تو انہوں نے ہم سے تعاون کرتے ہوئے یہ پروگرام کیا، اور انہوں نے اس میں میاں محمد حنیف سومرو کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ آئیں اور سرمایہ کاروں سے جو ہے 1-to-1 میٹنگ کریں، بات چیت کریں، اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. لیکن بدنصیبی یہ قسمت یہ کہ جیسا بھی پاکستان میں ہوتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سرمایہ کاری آئے، انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ٹیم کیسی ہے، اور وہ ٹیم کتنی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور آنیسٹ ہے اپنے وزیر اعظم کے ساتھ. تو ہوا یہ کہ جناب میاں محمد سومرو صاحب نہیں آ سکے، اور وجوہات کیا ہوئی مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے پروگرام اپنا کنڈکٹ کیا، کیونکہ ہمیں تو پاکستان سے محبت ہے، ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں. اور جو لوگ بھی CEO جو بہت ہی بزی ترین لوگ ہیں، کافی مصروف رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ٹائم نکال کے وہ آ کے بیٹھے اس شام کو، اور منتظر ہے کہ میاں محمد سومرو صاحب آئیں گے. لیکن بدنصیبی قسمت کے ان سے شرف ملاقات حاصل نہ ہو سکا، اور وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکے. لیکن ان کی ٹیم آئی تھی وہاں پہ، اور اس ٹیم نے جو انفارمیشن دینا تھی وہ دے دی، جو ایک کلیریکل اسٹاف دیتا ہے. وہ آپ کو ویب سائٹ پہ بھی مل سکتی ہے ایسی، لیکن لوگ بات کرنا چاہتے تھے فیس ٹو فیس میاں محمد سومرو سے، وہ نہ ہو سکے. مجھے امید ہے کہ وہ اس کو فلفل کریں گے، کم بیک کریں گے. ناظرین، تو آئیے ملاقات کراتا ہوں ان ہنار لوگوں سے جو واقعی پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنا ٹائم دیا، وقت دیا. آئیے دیکھتے ہیں یہ زوم ویبنار which is coordinated by Pakistan American Chamber of Commerce, OPTV Global and PTI America. Of course, I'm really congratulate Mr. راجہ یعقوب صاحب، محنت سے وہ لوگوں کو لے کے آیا، اور جاوید اختر صاحب نے بھی کوآرڈینیٹ کیا اس میں. I'm very thankful to them. Okay. اور چیمبر آف کامرس کے بورڈ کا بھی شکریہ کہ وہ ہمیشہ آگے آتے ہیں ان چیزوں میں. آئیے دیکھتے ہیں یہ زوم ویبنار ری برانڈ پاکستان. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Assalamu alaikum. Can everybody hear me? Yes. On behalf of Chamber of Pakistan, OPTV, and PTI USA, I welcome you all for a great webinar. And the guest of honor needs no introduction today. He's very well known. And this seminar is being totally designed by these three groups. I'm repeating again myself: OPTV Global, PTI USA, and Pakistani American Chamber of Commerce. I am a co-host with Waqar Ali Khan. Waqar Ali Khan also doesn't need any introduction. Everybody around the globe knows him very well. He's been conducting these kind of seminars for last many, many years. So with any more further delay, I would request Mr. Waqar Ali Khan to introduce his guest. Waqar Ali Khan, floor is yours. Assalamu alaikum, folks. First of all, I'm very honored and touched that everyone is here. I'm very proud to say that the cream of the crop here from all over America, and I'm very thankful to Mr. Raja Yaqub Saab, the acting president of the PTI, which is a renowned entrepreneur, businessman, writer, intellectuals, leaders among us today, and he worked very hard, including his friend Mr. Javed Akhtar also coordinated. So I'm very proud that on my call, mashallah, at this time, mashallah, पूरे अमेरिका से लोग यहाँ मौजूद हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि जनाब याकूब साहब ने ये बेड़ा उठाया मेरे साथ और एक अपॉर्चुनिटी दी कि सी हाउ वी कैन इन्वेस्ट पाकिस्तान, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी available in Pakistan, and how we can help the country to boost the country economy. And today is the very, very great day, because let me tell you, जितने भी सेमिनार अभी तक हुए हैं, ये सबसे बड़ा जो है बिजनेस वेबिनार है, जिसमें बड़े रिमार्केबल लोग मौजूद हैं, जिनका मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, जिसमें जनाब शौकत धनानी साहब is here. He is the third largest employer in America, which is a very big group. Dr. Sohail Masood Saab is here, and which is our $500 million company मौजूद है. Aslam Khan is one of the largest group. तो याकूब साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप थोड़ा हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज के, जनाब मियां मोहम्मद सोमरो, फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, फार्मर गवर्नर सेन भी रह चुके हैं, सीनियर बैंकर भी हैं, आज हमारे दरमियान है. आप उनका तारुफ कराएं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. जनाब राजा याकूब साहब जी, मैं सबसे पहले वकार भाई आपका बहुत मशकूर हूँ, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने माशाल्लाह इतना ग्रेट नेटवर्क जो है पूरे यूएसए के बिजनेसमैन से और कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल से, कम्युनिटी के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनसे आपका हर एक से रब्ता है, एंड आई एम वेरी रियल प्राउड ऑफ यू. दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि आज हम सब की ये खुशकिस्मती है, इस क्राउड में मोस्टली लोग वो बैठे हैं जो ओवरसीज भी होते हुए पाकिस्तान हैं, और उनके साथ उनके जो डायरेक्टर डीजी हैं इन्वेस्टमेंट के शमीम खान साहब और खुर्शीद खान साहब और अमादुद्दीन मेरे साथ राब्ते में थे. मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने उससे मेहनत से हमारा ये साथ दिया ताकि हम लोगों को ये फैसिलिटेट कर सकें कि इस मुल्क के अंदर जितने भी पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत ही जो है वो कोशिश कर रहे हैं. और हम इमरान खान के पार्टी के एक स्पाई होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि इन तमाम दोस्तों, मैं खुद एक बचपन में टाट बोरी के स्कूल में पढ़ा, 6वीं से 8वीं तक जो है 6 मील हम रोज़ाना सफ़र करते थे. फिर अल्लाह ने मौका दिया लाहौर जाने का, कॉलेज यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग किया, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था 1983 की यूनियन में, और फिर अल्लाह ताला ने और बहुत सी
जो सलाहियतों से और नेमतों से नवाजा, और इसी तरह हर बंदी की एक स्टोरी है इस मुल्क के अंदर, और हमारे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में और इस सोसाइटी में बड़े बड़े टैलेंटेड और पावरफुल लोग जो है मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा यकूब साहब। आज माशाल्लाह पाकिस्तान से सब मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर सना खान पाकिस्तान के दौरे पे हैं, ऑनलाइन कॉलेज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इनका ऑलरेडी कॉल सेंटर चल रहा है वहाँ पे। इज ए PhD रेडियोलॉजिस्ट, वेरी रिनाउंड बिजनेसमैन। डॉक्टर सुहेल मसूद इज हियर, धनानी साहब हियर, अहमद सैयद जो है IM पाकिस्तान के चेयरमैन है वो मौजूद हैं। बॉस्टन से जनाब शाहिद खान साहब मौजूद हैं, और नासिर राव साहब हैं, इम्तियाज हराई, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ऑलवेज देयर। जावेद अख्तर साहब सैक्रामेंटो से हैं, और एग्रीकल्चर के गुरु जो है जनाब हफीज रहमान साहब, वो भी आज हमारे दरमियान है, जो सबसे बड़ा राइस फार्म सैक्रामेंटो में चलाते हैं, और सदियों से इनकी फैमिली वहाँ आबाद है। तो आज का फोरम बहुत अच्छा है, और मैं चाहूँगा सबसे पहले हम अपने जो है मेहमान को सुने। जो हमारे मेहमान हैं, जो इस वक्त सुबह 7 बजे से उठकर बैठे हैं और आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ताहिर जावेद साहब भी कहीं यहाँ पे होंगे, और बड़ी खुशी है कि उन्होंने मुझे कॉल किया, he want to be a part of it. So I would like to really, without any delay, I would like to invite and thank you for very much for Mr. Jamal Khwaja. Is a very seasoned businessman in construction, real estate, and mortgage, and he always there to support this Zoom meeting. So I would like to invite Janab Mia Muhammad Sumru Sahab to speak our very honorable guest, very renowned business community here. Mr. Mia Muhammad Sumru Sahab, you have a floor. Alhamdulillah. गुड मॉर्निंग वकार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा एक आज कॉन्फ्रेंस जो है ना जूम पे मुनक्किद किया है, और ये हमारे लिए एक बाइस फख्र है पाकिस्तान। सबसे पहले आपसे ये माजरत कर रहा हूँ कि मियां मोहम्मद सुमरू साहब क्योंकि सिंध के इंटीरियर में इस वक्त सेनेट के इलेक्शन के कैंपेन में मसरूफ हैं, तो इस वक्त वो ना स्काइप पे हमारे साथ है ना फिजिकली मौजूद है। इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, और उनके बिहाफ पे मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद आपके साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, इस पूरे प्रोग्राम को मॉडरेट करूंगा, और मेरे साथ शमीम साहब हैं डायरेक्टर जनरल जो कि प्राइवेटाइजेशन के हमारे एक्सपर्ट हैं, और जूम पे हमारे बाकी एक्सपर्ट हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर जो हैं, जो मुख्तलिफ प्राइवेटाइजेशन एंटिटीज हैं उनको डील करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जहां जहां हमें टेक्निकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो कंसर्न DG हमें वो सपोर्ट दे, स्टेज पे है और क्या कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे पास 19 एंटिटीज हैं बड़े बड़े, जो कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में हमारे CCO। अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये 19 एंटिटीज इस वक्त हमारे एक्टिव लिस्ट पे हैं। ये 19 जो है ना बड़े बड़े एक्टिव एंटिटीज, बड़े बड़े एंटिटीज इसमें 1223 मेगावाट बलोकी पावर प्लांट है, 1230 मेगावाट हवेली बहादुर पावर प्लांट है। ये दो बिल्कुल रिसेंटली डेवलप्ड हैं, और हाईटेक हमारी दो पावर प्लांट हैं जो कि हमारी लिस्ट में है, इस वक्त बड़े एक्टिव और एडवांस स्टेज पे हैं। इसके बाद SME बैंक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बैंक है हमारा, ये प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में है। फर्स्ट वुमेन बैंक है, सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर, जनाब कमीशन सेंटर इस्लामाबाद, मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, हेवी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, गुद्दू पावर प्लांट, नंदीपुर पावर प्लांट, PIA, रोजवेट होटल and sale of various small properties in Pakistan. So ये 19 एक्टिविटीज हमारे एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में हैं जो बहुत एडवांस स्टेज में हैं, और चंद एक इनमें से almost half a dozen, they are almost ready in 1 or 2 months they will be privatized, all the process is completed. तो हमारे प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस ऐसा होता है कि कोई भी एंटिटी जो गवर्नमेंट चाहे प्राइवेटाइज करना, वो मुख्तलिफ हमारे तरीकों से हमारे लिस्ट में आ जाता है, और उसका प्रोसेस ये है कि हमारा प्राइवेटाइजेशन एक बोर्ड है जो कि सीधा बिजनेसमैन, प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट फंक्शनरी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन पे मुहित है, और ये लोग पहले डिलिब्रेट करते हैं किसी भी एंटिटी को प्राइवेटाइज करने से पहले, और उसका
ہم ایک ایف اے مقرر کرتے ہیں جو کہ سارے اس کے ڈیو ڈیلیجنس اور فائنینشیل جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں اس پہ انالائز کر کے بورڈ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جب بورڈ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کے قابل ہے ہمارے آبجیکٹو کے مطابق, تو اس اینٹیٹی کو ہم کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو کیبنٹ کمیٹی ہمارے لیے سب سے ہائیسٹ فورم ہے جہاں پہ میاں صاحب سومرو صاحب انڈسٹری کا وہ اینٹیٹی ہوتی ہے, سیکٹر کی اینٹیٹی ہوتی ہے, ان کے ریپرزینٹیٹو موجود ہوتے ہیں. اسی طرح ممبرز آف پارلیمنٹ موجود ہوتے ہیں, منسٹر موجود ہوتے ہیں. وہ اس پہ ڈیبیٹ کر کے, اور اگر ان کے خیال میں وہ پرائیویٹائز کرنے کے قابل ہے اور ایسے ایشو نہیں ہے, تو وہ کیبنٹ کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن لسٹ میں شامل کیا جائے. تو ونس اٹ از ان پرائیویٹائزیشن لسٹ, دین پرائیویٹائزیشن کمیشن اس پہ اپنا کام کرتی ہے. اور یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہ لیگلی کورڈ ہیں. ان کو ہمارا پرائیویٹائزیشن آرڈیننس کور کرتا ہے, جس کو ابھی ہم ریویو بھی کر رہے ہیں اس وقت کے مطابق. تو ابھی ہمارے پاس 19 اینٹیٹیز ہیں جو کہ بالکل ریڈی ہیں. دیز آر اوور لو ہینگنگ. تو یہ پورا پروسیس ہمارا جو ہوتا ہے بڑا جامع ہے, ہائیلی ٹیکنیکل ہوتا ہے, اور اس طریقے سے نہیں ہے جو pre-90s میں ہم پرائیویٹائزیشن کرتے تھے. اور دس ایوری تھنگ از لیگلی کورڈ. تو اس میں کوئی اس وقت ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو انویسٹر کے لیے کوئی آگے جا کے پرابلم کریٹ کرے. So the whole process is transparent, the whole process is legally covered. اور اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ جیسے انویسٹر جو کہ پاکستان کے لیے بڑا کام کرتے ہیں overseas. مسئلہ ایک ابرار صاحب ہے پینسلوینیا سے, انہوں نے مجھے کال کر کہا جی کہ ہمیں وہاں پہ بہت سارے پرابلمز ہیں ریگولیشنز کے اندر. ایک اور دوست ہے, انہوں نے کہا جی میں یہاں سے پیسہ لے کے گیا ہوں, کسی بزنس میں اوپر خرچ کرنا چاہتا تھا. فرسٹ دے ایس کا کہ یہ پیسہ کہاں سے لے کے آئے ہو. پھر جو عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ 55 days 1 window سروس ہے, وہ ہمیں وہاں پہ نہیں مل رہی. لیکن میں چاہوں گا کہ شمیم خان صاحب تھوڑا اس پہ بیان کریں, پھر ہم دوست جو آپ سے سوال کریں گے مزید. تھینک یو. میرے خیال سے یعقوب صاحب ایک کام کریں, آپ پہلے ڈیفینیٹلی شمیم صاحب کو ہم سننا چاہیں گے یہاں پہ, اور سارے لوگ جمع ہیں اور کچھ لوگوں نے جانا بھی ہے بہت جلدی, انٹرپرنور بزنس مین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کہ ہم راؤنڈ کال لے لیں, جو لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ یہاں جمع ہیں, ان کے ذہن میں کیا کیا سوالات ہیں, کیونکہ ابھی جو بھی پروجیکٹ انہوں نے بتایا ہے وہ سارے پرائیویٹائزیشن کے اوپر ہے. اور جو لوگ یہاں موسٹ لوگ جمع ہیں وہ انویسٹمنٹ کے اندر ہیں, جو مختلف پروجیکٹ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے. تو میں ایکسپلین کر لوں سر, پہلے میرے خیال میں بات کر لوں, اس کے بعد کر لیں. یس جہاں تک آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹ ریلیٹڈ کوسچنز ہیں, تو ہم نے جو بی او آئی ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ, کیونکہ انویسٹمنٹ پورٹ فولیو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اور ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے, اور سینئر لوگ ہیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ زوم میں موجود ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو اپارچونیٹیز ہیں, جو ایشوز ہیں, جو ان کے پاس اس وقت پروفائل ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں سر تھوڑا سا آپ سے ایک اوور ویو آپ کو دوں کہ اس وقت ہماری ٹوٹل کوئی 200 کے قریب ایس او ایز ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. اس میں میجورٹی جو وہ لاس میکنگ ہے, اور جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کا ایک ایس او ایز کا ریفارم ایجنڈا ہے, جس کے تحت انہوں نے بڑی پرائرٹی دی ہے اس کو, اور ایک کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز بنا دی ہے. وہ کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز, اس کے پاس جتنی ایس او ایز کا ایک وہ انالیسس کرتے ہیں, اور اس میں سے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کون سی اینٹیٹی جو ہے وہ اس کو ہم لیکویڈیٹ کریں, کون سی ہم پرائیویٹائز کریں, کس اینٹیٹی کو ہم پرائیویٹائزیشن جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈ میں لے کے جائیں. تو یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا ایک ریفارم ایجنڈا ہے. اس کے تحت جو ہمیں اینٹیٹیز دے دی گئی ہیں وہ تقریباً 19 اینٹیٹیز ہیں, اور ہمارے پارٹ پہ یا گورنمنٹ آف پاکستان کے پارٹ پہ جو ہائیڈلز ہیں, جو باٹل نیکس ہیں جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ہم ہائی ایپس کو بھیجیں گے, اور اس کا پوری طرح سے اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ فیوچر میں ہمارے پاس اگر کوئی کوآرڈینیشن میکانزم بن جائے, جیسے آپ کا ایک بڑا اچھا فورم بن گیا ہے, اور اس میں بی او آئی اور اس کے اندر جو ہے منسٹری آف فائنینس, اسٹیٹ بینک, اور چونکہ ریگولیٹرز ہمارے پاس ہیں, تو ہم یہ ایک جوائنٹ ایک بنا لیں, ایک گروپ بنا لیں, اور اس گروپ کے ذریعے سے جتنے ایشوز ہیں ہم وہ سارٹ آؤٹ کریں اور ڈسکس بھی کریں, اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر اپنی سجیشن بھیجیں, تاکہ اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو اور ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آ سکے.
Thank you very much, sir. Mia Saab, thank you very much. First of all the आपकी जो briefing है, detailed briefing है. I have done this, mashallah. Last time we have a Zoom meeting with the Federal Minister of Mr. Razak Daud, and he was on time here. Actually, he was 10 minutes ahead of time here. The seriousness of the project shows how the response from the government of Pakistan. If it is a Wazir-e-Azam Imran Khan ho ya Janab Mia Mohammed Saab ho, टाइमिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है. अमेरिका में टाइम निकालना बड़े बड़े जो टॉप सीईओज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और जब कि संडे और मंडे आने वाला है, तो ऑल दीज पीपल दे आर गेट देयर टाइम, अपने टाइम निकाल के यहाँ मौजूद हैं. और मैं चाहूँगा कि सीरियसनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जब सीरियसनेस शो करती है लीडरशिप की जानिब से, तो फिर इंसान का हौसला जो है वो बढ़ता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर जो है मैं इनवाइट करूंगा जनाब डॉक्टर सुहेल मसूद को अपने राय का इजहार करें. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं बॉस्टन से बोल रहा हूँ, सुहेल मसूद. जितनी भी ये टॉपिक्स पे डिस्कशंस हुई हैं पाकिस्तान के साथ, डेफिनेटली दे आर ऑल वेरी इम्प्रेसिव कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंटरेस्ट ले रही है कि जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें या पाकिस्तान में बिजनेसेस आगे बढ़ाएं. मेरी बिजनेस जो है वो बड़ी यूनिक है इस तरह से कि मैं मरीजों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ प्रोवाइड करता हूँ नर्सिस के ज़रिए. काबा फ्यूजन जो है वो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंटली ओन होम इन्फ्यूजन कंपनी है अमेरिका में. हमारा ऑलमोस्ट $500 million रेवेन्यू का कंपनी है, और बेसिक जो है ये प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को घरों पे इंट्रावीनस ड्रग्स. तो कोशिश ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो तो जो मरीज़ बेचारे जिनको कीमोथेरेपी या उनको पेन मैनेजमेंट या और दवाइयाँ चाहिए, और जो गांवों में रहते हैं या शहरों से थोड़े दूर रहते हैं, उनके लिए अस्पताल आके ये दवाइयाँ बार बार लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो सर्विसेज जो हैं हम उनको घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये हमारा गोल है, और इंशाल्लाह जैसे भी मुझे टाइम मिला मैं पाकिस्तान चक्कर लगाने का मेरा पूरा प्लान है इंशाल्लाह वकार भाई के साथ. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Assalamu alaikum, everybody. My name is Aslam Khan. I am in Dallas, and I see some of you I know, like Javed Rathore and others. We are in franchising business. We have 7 brands: Hardee's, Carl's Jr., Church's Chicken, Long John Silver, and Piccadilly, Fats, yeah, to name a few. So we have all these restaurant brands. And I have been going to Pakistan earlier days of Imran Khan for 2 years in a row. Every 2 months for a week or 10 days. And and running around in offices. And finally I came back and I said, it's not gonna happen anything from the top. So you gotta do something from in a local area. So what I did is
I really wanted to do something. So I put the road connected to big road from my village. So, and then I put one cleaning, second one is ready to go, and I'm putting one bridge. And I don't need their help. I found out that I can get local help. Now, I did tell them that I wanted to invest a couple $100 million in Pakistan. I think is the right timing for investment. Ambassador told him, I met Imran Khan myself. So if anybody in here from the government, they all know it, and we didn't get anywhere. Now somebody mentioned one window operation. I don't know when is that gonna happen. And where is that window? I think that window didn't open between here to God and then to Pakistan. So I think most of us are very successful what we do in United States. We need something and somebody who understand how we work so we can do things for them. And that's my kind of a 2-minute speech. I don't want to bore you all. सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं राइस फार्मिंग, मेरी फैमिली और मैं राइस फार्मिंग करते हैं। हम काफ़ी अरसे से अबाउट ऑलमोस्ट 100 years से कह लें कि हम राइस फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान के लिए ये अपना मेरी जो एक्सपर्टी है वो यूटिलाइज हो सकती है, तो वी आर ऑल फॉर इट। वी वांट टू हेल्प आवर Pakistani farmers, and anything I can do, I'm just one call away. And Mr. Waqar is doing, mashallah, wonderful job connecting, Pakistani American with Pakistani, people. तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को आउट ऑफ बॉक्स जो है वो मेजर्स लेना पड़ेंगे और सारे सिस्टम को रिवैम्प करना पड़ेगा, तो फिर जाके यहाँ जो लोग बिजनेस कर चुके हैं वो इतने आदी हो गए कि हर चीज वो बड़ा इजीली स्मूथली करने के आदी हैं। तो यही चीजें उनको प्रोवाइड की जाए। और दूसरा एक आम पॉइंट मैं आप सब लोगों को के सामने रखना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त जो हमारा जिस मुल्क से कंपटीशन है हर सतह के ऊपर, उस मुल्क का जो डायस्पोरा है उसने बड़ा रोल अदा किया है जो रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशन को बिल्डअप करने में और इकोनॉमी को बिल्डअप करने में, इसलिए कि वो सारा एक कोहेसिव एफर्ट्स थी, सेंट्रली डायरेक्टेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। लेकिन मैं वो कोहेजन ना पाकिस्तान की तरफ से देख रहा हूँ ना कम्युनिटी की तरफ से देख रहा हूँ, और हमारे खिलाफ उस मुल्क ने 3 मौजू पर मल्टी डायरेक्शनल मल्टी टियर्ड जो है वो एक साजिशें शुरू की हुई है डिस्टेबलाइज करने के लिए, कश्मीर के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी और यहाँ डायस्पोरा में भी। जिस तरह जो आपने देखा कि 600 फेक वेबसाइट जो है वो एक्सपोज हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग लगता है कि बिल्कुल वी डोंट हैव अ रियली रियलाइजेशन और वी कांट सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो हमें अपने आप को इकट्ठा होके अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मफादात को बचाने के लिए और कश्मीर को बचाने के लिए, चूंकि कश्मीर के अंदर जो लड़ाई है वो कश्मीरियों की नहीं, वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी और पाकिस्तान के फ्यूचर की है। तो उसके लिए हम सबको मिलकर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हमने किन किन महाजों पर, चाहे वो डिप्लोमेसी के महाज हैं, इकॉनमी के हैं, पब्लिक रिलेशंस के हैं, और अपना जो इमेज है वो उस बिल्डिंग के हैं, हर जो टॉपिक है, हर जो एरिया है उसको हमने एड्रेस करना है मिलजुल के। मेरा ख्याल है कम्युनिटी का बड़ा रोल है। मैं इनवाइट करूंगा जनाब सिद्दीक साहब को, कैलिफोर्निया से, जो बहुत सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतालिक हैं। जनाब सिद्दीक साहब। They found out that I'm going to be moving my entire family. A bunch of my team is also moving with their family to Pakistan for all these things. So the question for the commission is this: we're ready to bring in a lot of money, millions of dollars of either our own personal wealth or investors that we have who are ready to bring that money with us.
And by that, I've had investors come here to me and say, hey, in 3 months, I'm going to get 50 million. I'm going to invest with you. Our high-rise developers have said, hey, if you're going to go to Pakistan, we'll help you build those buildings there and do what you want, which is affordable housing. Okay. We'll help. And then the people that build the cities here who have 34-year experiences, they're willing to come with us too. So my question is, from hearing the brother earlier, that all that stuff that he did, even with the prime minister, but nothing happened for business. So it makes us wonder, those of us who are a little bit younger than you guys, who haven't been there in a while, and we have people who want to come with us, and which is American money. Okay. By that, I mean, most of the people I work with are not in the Pakistani community. Okay. They're in every other community. And we have between 80 to about $125 million that Mr. Zia is not aware of yet. I'm sorry, sir. But we do have that extra money that's been committed as well to come with us. So we want to make sure that the red tape is out of the way. We work with the government. Obviously, we love transparency in California. We're all about the environment. We're about building things and getting things done. So that would be the question, is for somebody like me who's going to be moving my family in about 2 months or so when COVID is over, inshallah, we're all going to be there. Okay. So we want to make sure that, you know, whether it's the ministers or whoever is doing the item, we don't spend the next year just having discussions. That I have gone to Pakistan 3 years ago and started my own business of making pavers. And as anybody else would have told me that, have you gone crazy? How to work there? My experience is totally opposite of what I'm hearing from you guys. I went there, not that I know too many people, but believe me or not, I did not face any of the problems because I just worked like a local guy there. I bought 10 acres of land, commercial land, and I needed 450 watts of PMT. I can swear you, I did not spend a single bribery or a source to get anywhere where I wanted to go. The engineer told me it might take me 6 months to get my PMT. I got it in less than 4 months. Every department, because I do deal with excise and taxation department as well, I did not face those problems. So I'm sure my experience will not make you happy, but I personally feel that the people who have not gone physically to Pakistan, you should go there. I think Pakistan is a real country where you can go and invest. And mind you, I have done business in Malaysia, Philippines, Mauritius, Sri Lanka. I think Pakistan is ready. The labor skill is amazing. Now, a lot of people, like, you know, I've seen a lot of people get these news from different sources. Believe me, and I'm honestly telling you, till you don't go down there, don't deal with it, you will never understand what I'm explaining you. Things have changed in that country thanks to Imran Khan's government, thanks to the timing, thanks to Allah, things have really changed. So if anybody wants to explore this with me, I'm always ready to work out with you. Thank you very much, Waqar Ali Khan, for giving me this opportunity. I have the similar experiences whenever I go to Pakistan. As Jamal Khaja Sahab said, there are some difficulties, but it's not too hard. And I encourage everybody to do this. And we will continue working whatever way we can. Thank you very much. I will continue listening to you. Pakistan has been changed. और जितनी भी रुकावटें थी वो काफ़ी तौर के ऊपर इमरान खान ने हैंडल कर चुका है और काफ़ी जो डिपार्टमेंट हैं दे आर वर्क विद यू और ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो सुमरो साहब से आज मुलाकात थी इट्स वेरी गुड आइडिया वी हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टर कैन पाकिस्तान की जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ये तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर हम उनकी हेल्प करें और आई एम लीविंग फॉर पाकिस्तान इन नेक्स्ट वीक so I have appointment to see him also, Mia Mohammad Sumro Saab, for that, and we are preparing a delegation for oil and energy which is going to provide a program for 20 years. I think the big projects like Steel Mill, multi-million-dollar project, like a Nandipur power plant, like government of Pakistan has this tourist department. They have some facilities, resort, hotels, and like a PIA. There are maybe 100
major projects. Each one of them would cost multi-million dollars. And they are looking for either a public-private partnership or outright having a consortium of people like us to go back, take our investors with us, take American investors that we know with us, and work together. But these are mega projects, and they would, I don't know, I'm sure there are some very rich Pakistanis, but I would say if we don't have our own money, we know people in Chicago and in Los Angeles, New York, Houston, people in the field we are in, we know people, they have the money and they are looking for markets in the third world countries or the developing countries. And I think that's where the opportunity is for us. And this question is from Mr. Sumro. I've been in the hospitality business for over 40 years, alhamdulillah. And I really would like to do something at this time to figure out what is the best course of action that the government and through your leadership, we can get some data to make sure that the people like me do get the conviction that this is the time to invest in Pakistan and bring a brand like Hilton and Marriott. 80% of my portfolio is Marriott and Hilton in the United States. And alhamdulillah, we have a very good team. We can start the operations, from ground up, and also can do a development, or we can make an acquisition with an existing asset in Pakistan. So I'm open to any of the suggestions we might share with us. I am also interested. मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ताल्लुक है. हम स्टेट लाइफ को ऑन बोर्ड लेके या पाकिस्तान कोई भी हेल्प कर सके, हम बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को लाइफ इंश्योरेंस में प्रोडक्ट पे कर सकते हैं काम. Thank you very much. We had Governor Sarwar Chaudhary, Sarwar Saab, when he came and visited here in Chicago. And we had some meeting one-on-one basis with him. And when we talked about the clean energy, especially the windmills and all that, and I talked about the corridor that stretches about a 400 to 500 kilometer from Jampir, and he got real excited. And he said, well, why don't we work on it? So then he instructed his aide, and he says, take his information. I'm planning to go back to Pakistan very soon. And inshallah, we are looking and exploring into the clean energy. And this is what I really like to do. Yeah, I'm very much interested in, the opportunities that I'm hearing about, but would love to get more information. But everything, seems very exciting. And from, what I'm hearing, I'd like to get involved and, possibly invest and also, use my skill sets and ability to be able to manage and execute on some of these plans. So my expertise is management, technology. I'm a senior executive at, I've been a senior executive at Bank of America and Toyota in heading up their technology departments. Just on this call to let you know that I'll be with you whenever it comes to make sure that we all serving for US and Pakistan and building the bridges between two countries. And whoever's on the call, I believe Somro Saab is on the call. I congratulate him for all the great work he's doing in Pakistan. And just don't want to waste any more time, that I'm with you 100%. And I'm glad I had a chance to speak. So my question is about, Uncle, is the IT sector in Pakistan. How we can improve that sector in Pakistan? I think the IT section made the whole Silicon Valley is working. The chip technology is going in Pakistan. There's a lot of startup companies working, a lot of work project done by the Nasr University or in Lahore. There is a technology institute taking place in the Lahore. Actually, IT, there's lots going on in Pakistan. Mr. Zia Chishti is working in a very hard and very big project. Najib Ghori is working. NetSol is a very big company, the public company operating in NASDAQ. So IT is going very big, okay? But my question is more about a nonprofit that my daughter started about 8 years ago.
to give education to girls. And it was very successful. It has been very successful. It has been supported by the government, including Imran Khan. But about a year ago, we are started having problem about sending the money. And every penny we send, it was very difficult. So we have given all the papers, everything that is needed. We are still running the school. We have over 200 children in the school. We have a vocational center. My daughter, who started this about 8 years ago, tragically died in a car accident. So the business of nonprofit, which is coming from people like you and me, who are in business and wants to invest, I want to understand why this is so much difficult now, and why some of us are suffering, because even though we are doing a very good work and educating girls and educating women in that part of the world. This panel here is with the individuals I've been working with on this panel. I think we're definitely on the right track, and I'm excited, looking to do some good things with the projects that I've done. I think it's a beautiful thing when you go to a country and you see the changes, and you create a lot of jobs, and you see movement. It's all about movement and good energy. And again, I appreciate all of you. And Mr. Waqar Khan and Mr. Zia and Mohammed Sadiq. Thank you very much, everyone. तो मैं साउथ कोरिया के कुछ एक्सपीरियंस आपको बताऊं. आप लोग जो इन्वेस्टर हैं वो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, और आपको जो किराए मुश्किलात पहले आ चुकी हैं पिछले पास्ट गवर्नमेंट्स के अंदर, उसके बावजूद भी आप लोग तैयार रहते हैं, इंटरेस्ट होता है आपको कि अपने होम टाउन में इन्वेस्ट करें और ट्रेड करें. लेकिन मैं बहैसियत एक पाकिस्तान से बात कर रहा हूं इस टाइम के, पाकिस्तान में जो बैठे हुए इस डिपार्ट के लोग के, जनाब आप दूसरी जो ओवरसीज कंट्रीज हैं, फार ईस्ट वाले पूरी कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट दुनिया की फार ईस्ट में आए, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, यू नो वेल. तो साउथ कोरियंस के कुछ बैड एक्सपीरियंस भी रहे हैं. सबसे पहले तो हमें ग्राउंड को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, उनको फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी. इसलिए कि साउथ कोरिया के मैंने 10-15 बैंकों से जो मिलना जुलना रहता है कि अगर आप $5 का भी अकाउंट खोलते हैं तो वो आपके लिए खड़े होकर बात करते हैं और आपको सर्विस बड़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं. उनके चेहरे से नहीं पता लगता कि आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं या बिग बिजनेसमैन हैं आप. तो हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमारे वहां पे मेजबान हैं, तो उनको ग्राउंड इतना अच्छा करना पड़ेगा कि जी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के अलावा अराउंड द वर्ल्ड से जो इंटरेस्टेड है उसको इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई, लॉजिस्टिक मतलब उसको प्रोवाइड कीजिए. जिस जगह आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं वहां पे रूट्स बड़े अच्छे होने चाहिए. मैं आपको साउथ कोरिया की मिसाल देता हूं, यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री डेवलप होती है या कोई रिहायशी रेजिडेंट्स एरिया, सबसे पहले वो 2 चीजों का काम स्टार्ट करते हैं. पहले वो रोड बनाते हैं कि बंदा उस जगह पहुंच के वो जगह देखे कहाँ पे वो चीज बना रहा है और उसने क्या प्लान करना है, तो उसको जाने का रास्ता साफ मिले. दूसरा, वहां पे रोशनी हो रही हो 24 घंटे. तो कहने का मुख्तसर मतलब सिर्फ यही है कि बहुत अच्छी प्लानिंग है, और हमारे जितने भी अमेरिका में बिजनेस ट्रेड वाले लोग हैं उनको तजर्बात होने के बावजूद वो एक दफा फिर प्लानिंग कर रहे हैं, और आई होप मोहब्बत में ही कर रहे हैं और पाकिस्तान को डेवलप होता हुआ देखना चाहते हैं. मैं भी एक साउथ कोरिया से बहैसियत तहरीक इंसाफ पीटीआई के मेंबर्स कह लें आप या कुछ भी कह लें, लेकिन नंबर 1 मैं इंपॉर्टेंट रखता हूं कि पाकिस्तान को अपनी नजर में. लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमें क्या चाहिए? हम तो कुछ देना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते. उनको कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो सीड ग्रुप जो कॉटन ग्रोअर हैं वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है, कोई ग्रोइंग फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वो बेचारे बड़े सफर कर रहे हैं काफी सालों से. और हमारे पास यहाँ पे काफी एक्सपर्टीज हैं, जिस तरह क्रॉप्स यील्ड है हमारी बहुत कम है पाकिस्तान में. यहाँ कैंसस में है कि एग्रीकल्चर स्टेट है और हाई ऑफिशियल को मिलना बड़ा आसान है, और दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू विजिट पाकिस्तान. लेकिन है कि हमें कोई 1 विंडो ऑपरेशन चाहिए ताकि हम उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनको लेके जाएं, जो अपने हमारे जो जिम्मेदार हैं, जो हमारे फार्मर हैं, उनको जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराएं ताकि वो भी कुछ बेटर कंट्रीब्यूट कर सकें. बेचारे वो सफर कर रहे हैं. This whole meeting is wonderful, and I appreciate you doing this. And I personally feel that window that everybody has been talking about should be in the United States, so that people who want to invest in Pakistan can start the process in United States before they show up in Islamabad. So the government of Pakistan somehow, either in their embassies or their
other places here should set up that investment opportunity so that we don't spend all our money, show up in Pakistan, and then we are running around. I think that probably is the most important thing that they can do for Americans, Pakistani Americans in the United States. Thank you. हमारा ऑफिस जो यहाँ पे है कौंसल जनरल का ऑफिस शिकागो में, और हमारी जो टीम है डीसी में वो अवेलेबल है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन को भी प्रपोजल देना चाहते हैं वो हमें डीसी पाकिस्तान एम्बेसी डीसी की तरफ से भेजे। और जो यहाँ पे अभी जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के हजरात ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है वो बिल्कुल ठीक है, और वी अप्रिशिएट the contribution of Pakistani American diaspora in USA, and we will work with them, and we are open to new ideas. और हमारी टीम यहाँ पे है कौंसिलर की ऑफिस मिडवेस्ट के जो स्टेट्स हैं वो 12 स्टेट्स को यहाँ पे डील करती है, तो we are open here, और we will welcome new ideas from your side. So thank you very much for your invitation, and we will be happy to work with our friends here. जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम to all the respectable Pakistani Americans। जी जो हमारा कॉन्सुलेट जर्नल लॉस एंजलिस में है जो वेस्ट कोस्ट पर है, तो वी आर एट योर सर्विस। जो भी प्रपोजल और जो भी डॉक्टर साहब ने कहा, तो वी आर हियर रिप्रेजेंटिंग द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन कमीशन एंटायर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कमर्शियल साइड की चीजें हैं, तो वी आर हियर एट योर सर्विस। तो जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या जो प्रोजेक्ट में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, तो वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू। नादीन, अब है आपके मशहूर सेगमेंट का वक्त, लेट्स टॉक रियल एस्टेट, जिसको पेश करते हैं आपके लिए हमेशा जनाब जमाल ख्वाजा साहब। मुझे उम्मीद है कि आप अब पूरे एक रियल एस्टेट एजेंट बन चुके होंगे। आइए देखते हैं लेट्स टॉक रियल एस्टेट, प्रेजेंटेड, प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड बाय जमाल ए ख्वाजा। Assalamu alaikum Nazreen, your host and friend Jamal Khwaja here with another episode of Let's Talk Real Estate. Today I'm going to start with something very important. I was thinking about it. I met somebody who told me it's not a good thing, but he told me that he's been renting a 2-bedroom condo for almost 22 years. And he was like explaining me that for 22 years he's been living on the same condominium and he's paying $2,000 a month. So I roughly calculated that he's paying $2,000 a month into 12 and into 10 years, just 10 years. He have given the landlord $240,000. In 20 years, he have given $480,000, much more than what that condominium is worth. So I really want you all to understand, when you make a rent payment, you're making somebody else's mortgage payment. Forget about that house price will go up, what will happen. Just simply, you living on a rental property, giving the rent, you're throwing that into a trash can. But if you are making a mortgage payment, even 10 years, 12 years, 15 years, a substantial amount of money goes towards your principal. I do understand the amortization table works such a way that first few years, I think 7 years, you pay high interest and very small amount of principal. But in a long term, 15, 20 years, you're almost making more payment towards the principal. So here, I really want you to think about it. Owning your own property, especially when government is helping you and allowing you to buy with as low as 3.5% down payment, as low as 640 FICO score, and as low as 2.5% interest rate. If you're not buying a home, you're making a mistake. So I want you, my telephone number, my email address is coming right here. Call me, pick up the phone.
If you have any reservation, because of that reason you think I'm not buying because I have this problem, I want you to talk to me. Call me. I want to understand that what's holding you back not to buy a property. I'm amazed that somebody would rent a property, throw his money away, where he could be putting the money towards his principal. So with that, please keep this in mind, and especially first-time home buyers, call me. I'll help you. I'll send you the list. Whatever you need, whatever kind of a help you need, I'm here for that. Like to take some questions today, and a viewer has asked me a question. He says, Jamal, I want to flip properties. Great, I like that. And he wants to know what is the good area or what should I do about it. So I'll give you my opinion. As we all know, home prices have gone up. But it doesn't mean that it does not have any opportunity here. You still have a lot of opportunity. And simply I'll explain you. If you buy a home which you could increase the square footage, you will still make tons of money. And I'll give you an example. Suppose you buy a house which is somewhere around $425 a square foot. You buy that house and you add 50% of the square footage. Say you bought it for 1100 square foot and you added 1000 square foot to it. Now to add 1000 square foot, you will be spending maximum $200 a square foot. But guess what? Once it's ready, you can sell it for minimum 425 square foot. That itself gives you $225 a square foot you could make money. So yes, it's a great idea. You should do it. If you need help with anything, if you want me to send you some listings, you can go simply to jfkrealty.com and you can send your details. I can send you some listings. You want me to do one-to-one with you and discuss a particular property, I'll be more than happy to do that. So pick up a phone and call me. We'll start talking about it. But for the other viewers as well, that if you are thinking of investing, it's a great way to look at it. You buy a property for $425 and you add square footage to it with as minimum as $200 a square foot, there's ton of money to be made. So great question. Thank you very much. Yes, I will give you some information about market, especially where interest rates are concerned. We do see it last week because of instability of stock market, bond prices. I'm seeing interest rate going up slightly. Not to be anything of alarming, but still, if you have not refinanced your home or you were thinking about it, it's about time. Just do it. And especially for the buyers, if you are thinking of buying it, buy it now while the interest rates are low. You don't want interest rates to start climbing up. Yes, maybe it will bring a little bit home prices a little bit down, but paying higher interest rate, you lose out more on it. I'm sure you have seen my episode. I have talked about it, that if your interest rate is higher by 0.25% or even the house price is higher by 50,000, you're better off to pay 50,000 more and have 0.25% less in your interest. So, but anyway, thank you very much. Hope this gives you some information. I wanted to share on jfkrealty.com. If you go to the search, we have a special criteria over there which called foreclosure homes. And when you go to foreclosure homes, there are many things over there. You can find HUD homes. You can find foreclosure home. You can find REOs, bank-owned property. More information is there, and you can customize the city, number of beds, what kind of a price. So I will encourage you all to please visit jfkrealty.com and look at the search property. But once again, if you have something particular in your mind, you can call me. I can set up a system where every day, 8 o'clock, 9 o'clock in the morning, you will get fresh homes what have listed in those areas. So please call me for that. And I have another question, and very interesting question. He says, my loan is almost 600,000, but my income has gone down. Due to COVID, my income has gone down. How do I refinance?
So yes, it's not only you. Many people have lost that income what we used to get before COVID, but there are options out there. Now it will be very difficult for me to explain you. What I need you to do is send me your tax return, send me your 1 month of pay stub, and send me your mortgage coupon. Having these three things, I can calculate and see what kind of a income you'd need to qualify for refinance. And especially if you can save 0.5% of interest on your interest payment, that's a big amount. So I really want you to send those to me so I can help you out. But again, this brings it to another opportunity. You know, a lot of people are not seeing or waiting that the interest rate might go further down. I hope so, but the way the market is moving, I don't see that interest rate going anything lower than where we are. So don't wait for a long time. Pick up a phone, call me, my number, my telephone number, my email address is there. I'll be more than happy to refinance. And again, once again, I'll bring back to that topic that if you have not purchased your primary residence, this is the time. You must think about it seriously and look at the opportunity. 3.5% down payment, even if you're buying a $600,000 property, you just need $25,000, $30,000 to do this whole process. And rather than making rent payment, you can make your own mortgage payment. And that gives you so many advantages, especially all the interest payment is deductible. The property tax is deductible. And then whatever the value goes up, that's your money, that's your equity. So with that, I have to finish my episode here. But thank you very much for sending me all those questions. Keep on watching. Let's talk real estate. नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे और सफ़ीर पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके सवालात के जवाबात हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा ईमेल देख रहे हैं, हमारा फ़ोन नंबर, हमसे ज़रूर रब्ता कायम करें। अगर आपके शहर में, सिटी में कोई ऐसी शख्सियत है जिसको आप रूशनास कराना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे और सफ़ीर पाकिस्तान में, तो प्लीज़ हमसे रब्ते में रहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने वैक्सीन ले ली है, तो इंशाल्लाह आई एम प्रोटेक्टेड नाउ एंड आई होप अल्लाह ताला हमें सेहतमंद रखे और आपको भी सेहतमंद रखे। नाज़रीन, के साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे जाए चाहेगा इन अल्फाज के साथ, जहाँ भी रहे मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे और मेरा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान और प्रोग्राम से आगे देखते रहें। फोक्स, आई एम बैक। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।